Hello, beta. Good evening, everyone. So, beta, I have been receiving a lot of requests where you students are telling me that you want something on Indian economy, right? And many of the students are also telling us that they are coming from a background where they may not be able to afford the coaching, right? And they still want to go ahead and they want to study well, huh? तो बेटा मैंने एक बहुत अच्छा रिसेंटली कहीं पे कोट पढ़ा था विच सेड डिजर्व बिफोर यू डिजायर। इच्छा रखने से पहले आप उसके काबिल बनो। तो आई एम रेडी टू गो अहेड एंड आई एम रेडी टू गिव यू some important notes on Indian economy at no cost, right? ArthaPoint is taking this initiative to go ahead and share Indian economy notes with all the students, right? But you need to deserve before you desire. और हम डिजर्विंग कैसे बन सकते हैं? हम डिजर्विंग तब बन सकते हैं अगर हम अपनी पढ़ाई में अच्छे हों। If we are good at our studies, if we prove कि yes, we have it in us, हम पढ़ाई में अच्छे हैं, हम कर सकते हैं, if you deserve, if you go ahead and deserve that thing, तो फिर I can go ahead and I can also help students in that case, right बेटा? तो अभी का हमारा क्या एम रहेगा? You can go ahead and you can message us on our ArthaPoint number. Make a note of the number 83686-63950। इस नंबर पे आप रोहित सर को व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं। He will go ahead and he will add you to the ArthaPoint app, right? वहां पे आपको वो बैच में ऐड करेंगे and in that batch you will get access to Indian economy important notes, right? And public economics important notes. But there is a condition. As I told you, deserve before you desire. So condition ये है बेटा that I am going to go ahead and I am going to give it to only those students who have a good CGPA in their college. So CGPA पे I am putting a very generous, very generous condition that if you have more than 6.5 CGPA in your college undergrad, then you can share that with sir and I will go ahead and I will be sharing important Indian economy and public economics notes with all those students. For students who are part of ArthaPoint, you're already part of our family, जो हमारे साथ ही पढ़ रहे हो. For those students, of course, these notes will be available to you on the Telegram group. They will be available to you on your portal and you will be given access to those notes. And you can use these notes while revising for your CUET PG Economics preparation. Right, beta? So this is the small announcement that I wanted to go ahead and make. And now that only few days are left, बहुत कम दिन बच गए हैं आप, it is highly recommended that you make good runny notes. मैं हमेशा runny notes पे बहुत focus करती हूँ बेटा. Make good runny notes, हाँ? तो जैसे for example, if you are going ahead and studying, say a topic, let's say macroeconomics हम पढ़ रहे हैं. तो macroeconomics में we will go ahead and prepare a small runny notes. Say I am studying ISLM model. तो कैसे बनेंगे मेरे runny notes? Equation of IS curve, definition. Equation of LM curve, definition. उनका intersection के बाद what leads to the slope of IS curve, किस से slope B factor and alpha G से affect होता है, what affects the slope of IS curve, what affects the slope of the LM curve. Then उसके बाद बेटा intersection AD curve का slope किस से affect होता है. So try to make these running notes. Let me quickly give you an example of how you can go ahead and prepare these notes. एक example से समझने की कोशिश कर सकते हैं. I will just show you through this example. ऐसे ही किसी भी टॉपिक्स में माइंड मैप्स बनाओ, रनी नोट्स बनाओ. Those mind maps and runny notes will be very useful for your final preparation. तो जैसे for example, I was talking about the ISLM curve, right? तो ऐसा कुछ start करेंगे बेटा हम. IS curve, यहाँ पे इसका definition लिखा हमने.
इन सिंगल पेज। हाँ, यहाँ पे हमने लिखा LM कर्व, इट्स डेफिनेशन, देन यहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ IS कर्व लिख दिया, यहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ LM कर्व लिख दिया, यहाँ पे हमने एक IY स्पेस में IS एंड LM को प्लॉट कर लिया, फिर हमने इन दोनों का स्लोप लिख दिया, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द IS कर्व, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द LM कर्व, एंड हमने इसी के आगे लिख दिया दैट व्हेन IS कर्व इज फ्लैट, when IS curve is steep, when LM curve is flat, when LM curve is steep, ये हमने लिख दिया पूरा। Now after talking about the slope, फिर हमने यहीं पर लिख दिया shifts, IS curve when will it shift, LM curve when will it shift, फिर हमें पता है that from IS and LM curve we derive the AD curve in the PY space। हाँ, हमने AD curve का इक्वेशन लिख दिया, राइट बेटा। फिर हमने लिख दिया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एडी कर्व, राइट, इट शोज बोथ गुड्स एंड मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। तो दिस वेज देखो, एक ही पेज के अंदर यू विल बी रिवाइजिंग एवरीथिंग टुगेदर। यहीं पे हमने एडी कर्व का स्लोप लिख दिया, व्हेन इज एडी कर्व फ्लैट, व्हेन इज एडी कर्व स्टीप, एंड फाइनली हमने यहीं पे एडी कर्व के शिफ्ट्स लिख दिए। व्हेन एडी कर्व विल शिफ्ट, व्हेनेवर IS और LM कर्व विल शिफ्ट टू द राइट, तो एडी विल शिफ्ट टू द राइट, IS LM टू द लेफ्ट, एडी विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। अब इसी के नीचे हमने यहीं पे बना दिया नोट फॉर लेबर मार्केट, what happens to the demand and supply of the labor market, डिमांड कौन करता है, फर्म्स करते हैं, हाउ डू द डिमांड, उसका इक्वेशन क्या होता है, क्या VMPL है, क्या W है, देन आपने सप्लाई का इक्वेशन लिख दिया, हु गिव्स द सप्लाई, द हाउस होल्ड्स, यहाँ पे आपने सब्सटीट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट लिख दिया, दैट when wage increases कब लेबर सप्लाई इंक्रीज होगा, एंड वेज इंक्रीज करने पे कब लेबर सप्लाई डिक्रीज होगा, लाइक दिस, राइट, यू हैव रिटन अबाउट द लेबर मार्केट। फिर लेबर मार्केट की डेरिवेशन से यू हैव दिस डिमांड कर्व ऑफ लेबर, सप्लाई कर्व ऑफ लेबर, इससे आपका प्रोडक्शन फंक्शन आ गया, एंड फ्रॉम दिस प्रोडक्शन फंक्शन आपने एक AS कर्व जनरेट कर दिया इन द PY स्पेस। अब हमारे पास AS कर्व भी है, वी हैव द AD कर्व ऑल्सो, तो इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन कर दिया एंड वी गॉट द AD and the AS curve, AD-AS आ गया। Now from the AD-AS curve हमने final generate कर दिए, which is the monetary policy multipliers and the fiscal policy multipliers, उनके भी हमने फाइनली यहाँ पर वैल्यू लिख दिए। How much output changes when M by P changes, how much output changes when G changes, ठीक है। तो इन दिस ओनली यू हैव डिफाइंड द इंटायर IS LM का पूरा एक पेज में हमारा रनिंग नोट मिल गया, with all slopes, with whatever happens to the labor market, whatever happens to the IS goods market, to the money market, ऐसे करके हमने पूरा का पूरा एक अपना 3-4 chapters को combine करके 1 to 2 pager running notes. This is the importance of running note. Tomorrow if I have to revise, I don't have to go back to those chapters. If I need to revise, all that I need to go ahead and I need to do is I need to see, acha, okay, this is how the slope of IS and LM is determined. Okay, this is when it is steep, this is when it is flat. Okay, this is when it will shift. है ना? तो ये सब कुछ मुझे through just one pager, things will become much clear to me. So as I always tell you, there is a lot of importance of runny note, and all of you must prepare these runny notes. Okay, beta. So I just wanted to make this very quick announcement today. And I hope that all of you will take benefit out of this announcement. Thank you, beta.